ये जी खजाना एक अठाल सच्चाई है। आज मैं थोड़ा जब विचार करना चाहूँ, वो भाई साहब कहते कि आपने विचार जी मैं अपनी विचार करना, मैं समझदा मैंने गुरुद्वारा तो कटना चाहिए, क्योंकि ये तो सिर्फ गुरुआं दे विचार चलनी चाहिए है। ये तो सारे समझ लो कि सारी कमजोरी ये है कि मैं आके मैं अपनी विचार पेश करना। सवाल है कि सिक्खी सिक्ख्या गुरु विचार, it is सिद्धी गल है कि आप विचार कर सकते हैं। I can shift to English easily if anyone doesn't follow my Punjabi. But the point is कि एक चीज़ है कि सानू पता सारे गुरु कौन, ते सानू पता कि भावे बहस भी होए, सानू तकरीबन पता जे गुरबाणी का पाठ करिए तो थोड़ा जिहा विचार करिए, सानू समझ कि सिक्खी है। एक मैं कहना अंग्रेजी ते सिक्खी एक कोर्स ऑफ लाइफ, इट्स अ कोर्स ऑफ लाइफ कि एक चाल चलना, एक नाम जपना, कीर्त करना, बन के छकना बड़ी सीधी जी रास्ता है। सारी दुनिया ने कह सकता कि असी भी मंदे हैं वो सिख असी थोड़े नाल ही है, कोई वक्री गल नहीं है। जरा गुरु साहिबान है एक समुद्र सानू दिता, इन्नी ज़्यादा असी पंजाब ते मैं काफ़ी छे मैं राम नाम विचार कर रहे कि किसी जगह तो मैं बहुत शहर चला रहा, लुधियाना भी रहा, अंमृतसर भी रहा, लोग सारी डिस्ट्रिक्ट घूमिया, पिंड पिंड से घूमिया, बामन मगरा चलिया। मैं तो सारे 6 साल रह के तो पिछले 42 साल और उस जी मेहरबानी ना उत्ते सारे मैं जाता रहता, लेकिन अजे तक मैं ये गल सुनता है कि एक पासे कहते सिक्खी नूं खतरा है, सिक्खी नूं खतरा है। तो टाइम उस वेले नारा भी सी कि जो ऑल इंडिया 1978 की गल है, ऑल इंडिया अकाली कांफ्रेंस में मुखारे दे नाते लुधियाना के मैदान में सारे सिख आगुआं इकट्ठे होया। उत्ते मैनू अमेरिका तो वापस बुलाया, नहीं कहते तुसी आके बोलो उत्ते, तो मैं खड़े होके पता नहीं कि मिलियन पीपल इकट्ठे हुए, बड़ा टेंस टाइम सी सिख वास्ते तो मैं क्या आज मैं सुनी नवी गल कि सिक्खी नूं खतरा है। जदों तो मैं बाबा जी के चरण ते पहुंच गया तो मैं पिन पिन फेरे मैं सारे टाड़े सुनिया कि जिस दा साहिब डाडा होए किसनूं मान सके कोई। मैं सुनिया सी कि अठाल सच्चाई है, तो हम तुसी कहने सिक्खी नूं खतरा है। मैं क्या कमाल की गल है, सिक्खी नूं खतरा खड़ी नहीं पै सकता। सारे गुरु सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वो नासी के सब मेरे समाए पट्टे पत्ते विच समाए जाते हैं, हवा विच समुद्र विच जले हरी थले हरी गुफे हरे उरे हरी उरे हरे हरी जिहड़े रब दी खे बेअंत नाम साडे गुरु ग्रंथ साहिब विच शामिल किया। वो ही सिक्खी है कि जिते रब है, जिते नाम जपिया जाता, जिते अच्छा खम कि सच्चे उरे सबको ऊपर सच अच्छा वाली गल है, वो कभी खत्म किवें हो सकता? मैं कि सिक्खी कभी खत्म नहीं हो सकता, खतरा नहीं पै सकता। पर हाँ ठीक है, सिक्खा नूं खतरा पै सकता जे सिक्खी की उत्ते नहीं चले। वाइट खालसा मैं आज की गल नहीं कह रहा, मैं उत्ते फिर फतेह बुला के 3 दिन की गल बैठ के तो अजे भी यही गल है। It's not a real issue as to what is Sikhi, although आज एक इन्ना बड़ा समुद्र लेके असी समझ लो कि गुरु गोबिंद सिंह जी पंजाब दे कावत कूट दे डडू उत्ते छपर दे रहने वाले ने, उन्होंने मेरे वर्गे सिरक्यूज तो आते हैं बर्फ वाले इलाका जिते क्लाउड्स बदल बनाते, मैं धूप विच आ गया, मैं धूप तो डरदा है कि मैंने सनबर्न होए कि मैं अंदर ही रहता। ये खूह के जड़ों के उत्ते नहीं रोशनी पाए, वो खूह के जड़ों तो कट के उन्होंने खालसा बनाया जिहड़ी दुनिया के शाह जान वाले, जिहड़ी सारी दुनिया की रोशनी देने वाले ने, जिहड़े हनेरे में दूर करने वाले ने, सारे नूं मिसाल देने वाले ने, सारे दे रक्षक करने वाले ने। सारे तरह अपने वास्ते कुछ नहीं किया,
Sab apne vaste saunf ke dunya de rickshaw vaste. I say Sikh is the protector of Dharam. We are the protector of all Dharam, and Dharam in the broadest sense of justice. We represent the star Nadarondane, especially after September 11th, when you may know that Govind Sultan here was the first victim of arson, an attack on a religious place. And we went public with a powerful statement of forgiveness, galvanized the entire community while the nation was beginning to prepare for war. We galvanized everybody, brought everyone together. Because that's what a Sikh's supposed to do, to set a masal, to be distinguished among everyone. I joke with the kids sometimes. I said, all of you try to be average, right? Kidney try karke door the vich, games of it, you work hard so you can be average, right? Your parents are very happy when you bring a C home, right? And you're going to look to get into the average college, and you want to be average. And they all start laughing. Nay, Uncle D, nay, we want to take top grades. We want to be the first. So I say, so you want to distinguish yourself. You don't want to leave the class. You don't want to say we're a separate class. You want to distinguish yourself in your school, so you are a distinguished member of society. You're a distinguished citizen. You have values, and you have character, and you are ethical in everything you do, and you care. You're empathic, you're compassionate. You understand the concept of what a pluralistic civil society really means, because that is what our gurus teach us. That is the essence of Sikhism. It's not that if your child goes to church, they're suddenly going to be a Christian. If they go to a synagogue for a friend's bar mitzvah, that they're going to be... This is ki manas ki jat sabe ke pashtango, ki dera nasib. So this is what America and the Western world is dying to understand. How do we maintain our traditional values and still modernize? How do we have an ethical society? How do we bring compassion into a materialistic world? This is Sikhi. We're not asking them to put on turbans. We're not asking them to look like us. We're just, with our Guru's grace, here too, and pardon me if it offends someone, to show leadership in a society which desperately needs it. And yet we call ourselves a persecuted minority. Oh, Ayakiton. We're champions for justice. We are those who stand for everyone, for the universal rights. As I say, this turban stands for truth. It stands for justice. It stands to defend the universal rights of everyone to pray, publicly or in private, or these days or not pray, without fear of persecution. It stands to defend the rights of the poor, the needy, the elderly, those with disabilities who we ostracize from society. To see everybody as part of my community. That basic concept. This sense that to me there is no such thing as an other. To a Sikh there is no such thing as prejudice. But and yet we look at it. Why? Because we're so busy trying to define Sikhs in our rules, in our regulations, in our own understanding. Ki flana banda the dari banda ke bolte India te paisa thodi dari nabi all twenty. मैं बारे बहुत नहीं कहता तो थोड़ा पता के बंदे कहते कि दाढ़ी बांध करके क्या हो जैसे थोड़ी तो बात थोड़ी कुपान अंदर ही है क्या हो जैसे एक कुपान कितने नाप किता सिकादी whenever was a kupan the length of your kupan the measure of what a good person is सीख दा मतलब है कि अच्छे इंसान है and this is a resta that everyone can follow. A universal standard, not simply how we measure economic metrics or look at assessments in schools. The assessment in this school is very simple. Naam jap ke andaron jehdi pyar hai,
Pargat karke, roshni pargat karke, and bring that light wherever you are, in whatever profession, whatever you do. Get your hands dirty, because that dirt is going to wash away the sins of the world. Each one of us carries that light with us. So aise karke main koi lecture nahi karna hai. Main chota re student hai. Main samajhda sikh ka matlab hai student. So we're sharing our class notes. Aise karke main apni prachar nahi karna hai. So main ek benti bhi karna hai. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਮੈਂ 6 ਸਾਲ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ 72 ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਥਾਪੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਨ ਫਿਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ I got involved in helping in the establishment of these girls and camps and in trying to bring educational programs within Gurdwaras. But Galaya Matondasna, at the same time, we spent our time, my wife would cook for 150 people every month in a black community center, in the Latino community. A longer bar lady. Oh, I always looked at Gurdwara Banam to Pela. When people talk about prejudice, man, Hamisha Putai, especially among children, they say my parents don't understand. I ask them, Siddhigal, how much time do your parents spend outside of their business or their work with the American community on a percentage basis? And they say about 2%, 3%. How many of your parents have good friends, are part of a Rotary group, alliance, anything to give service to the country which you've adopted or has adopted you? Very few. And then I ask the kids, and they say, well, 98% of our time is spent. Our best friends maybe Sikh Gandhi, but 98%. I say, so do you wonder why there's no communication? Gale hai ki prejudice as karke hunde ne sari duniya de gal jidi immigration crisis. Sari duniya te Europe khas karke the ball jar. Because those people who come stay within their own communities. Seva karte within their own communities. What is our community? Our community is a sub-30 We educate within our own communities. And sometimes we don't do that very well, sorry to say. But Galaya, so I began to look at how do I look at how do we represent our gurus in the broader world. How do I look at education within the education system? How do I look at serving those in need? How do I look at involving myself in those projects where people would come to understand what we represent? And so Galaya ki aaj pata nahi kitni chair baat nu Sangit nu Gurdwara de vich bolan na mauka, because all my time is spent developing programs in character education, using Saki and Dharmic Sakis. How do we develop ethics? Private schools are inviting me to spend days there to teach there. I did a workshop called, now I am using my own name, I'm sorry, but just as a small massage, to ethical teaching in a largely unethical world. This is a Sikh subject. Taram kisra leona duniyate. Maya limit taram. All in all, Sikh, you're representing what Sikhism is. And at the same time, a dharmic sakhyandi. Ote in schools, it helps children understand each other. This is what Sikhism is about. And we share sakis such as Swadavagera, the Sadi Saki. Let me close with one total masala. If we continue to define Sikhs, we are walling up the light. We're putting a top over it. A Christian the Covenant that you take the light of the world and you put it under a basket. A Christian Pataya Saki. ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ
ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਛੋਟੀ, I was at a conference at Fordham University called New Directions of Spirituality ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਿਤੇ 500 ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ Tibetan Lama ਆਏ Tibet as one of the chief guests। Conference ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਮਾ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ entourage 20-25 ਬੰਦੇ। ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰਾ ਸੱਜਣ, ਜਿੱਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਖਲੋ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਮਾ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ